देख रहे हो? Looksmaxxing. The term itself means to maximize your physical attractiveness. Looks determine everything. Your personality doesn't matter. Your sense of humor doesn't matter. Your confidence doesn't matter. Your money doesn't matter. Your physique doesn't matter. And you being nice is ultimately useless. It's only your appearance that matter. This toxic culture males on social media paints the image that you need to look the best possible, and also other things like escaping the matrix or getting rich, quote unquote. And this is where we get introduced to a website called Looksmaxxing.org. भाई मतलब पूरी एक वेबसाइट है इसके ऊपर. तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, मेरे को जहां तक लग रहा है. मेरे को भी अभी पता लगा है, लेकिन अगर तुम्हें पता है भाई एंड यू सर्फ ऑन दैट वेबसाइट, यू आर क्रेजी. बिकॉज तुम अभी जो देखने वाले हो ना, मतलब कंप्लीटली आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड. Looksmaxx.org is a place dedicated to discuss anything related to looksmaxxing. They have a variety of users and so a variety of topics to discuss. You can get people's opinion on your face, look at what they think are their highest quality threads about looksmaxxing, as well as the option to look at every single thread on the website. Huh. What's this? Oh. Interesting. On the website, there are people as young as 17 asking for surgery advice on their faces. माय गॉड. तभी मैं बता रहा हूं भाई कि तुम्हें नहीं पता लगेगा, क्योंकि इट इज अ वेरी डेंजरस ऑब्सेशन. 17 साल का बच्चा DIY सर्जरी करके कुछ है जिसमें से फैट निकाल के तुम हटा सकते हो, पूरी प्रॉपर इंसर्शन करके. डैम. यूज्ड आई फक्ड माय लाइफ सो बैंचो. देखो पढ़ो. पिक्ड यूज्ड to it, but I fucked my life over by anti-bike from not using HG and correctly by having my reaction of it. So it even and told me he didn't know why this happened to me. To which other users will advise them on what surgeries to do. Now, you might think that there's Even मेरे goose bumps भी देख पा रहे होगे अगर भाई ये भी खड़े हो रहे हैं ये चीज को सुन के. मेरे को I am really very shocked भाई. मेरी दाढ़ी वाड़ी देखो जो बैठ भी नहीं रहे हैं. big deal with people giving advice, because on other platforms like Reddit, similar stuff, if not worse, happens, right? I don't know. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry. Person cuts his keeping off top five, take off the band chud. Person cuts his canthus corner of the eye. And जो भाई लोग अपनी आई भी खुद ही काट रहे हैं. keeping off top five, take off the fabricated screens and the microwave names. भाई. And when you remember that there are minors that, hell, could even be under 17 on this platform, this environment may or may not influence them to destroy their health or to do drugs. And also, on the topic of bad influence, this leads us to... I hope God forgives me for what I've done and my family is protected from any more harassment from this community. You might remember about a week ago, I exposed the most sinister side of Looksmaxx.org, a secret sub-society that manipulated kids into doing DIY surgeries by teaching them exactly where to make incisions and where to pull fat out of their faces. I knew that there would be consequences for me speaking out, things like my address getting leaked, deep fakes being made about me, my brother being threatened. My hope was, despite the risk, just by bringing it to light, we can prevent tragedies like this from happening, saving them from permanent deformation and massive blood loss that could risk their lives, because it takes years for professionals to be able to master this. यहाँ पे खुद ही DIY सर्जरी कर रहे हैं, बोटॉक्स कर रहे हैं, खुद ही बहन की भाई. देखें क्या है ये. Looksmaxx. Jim Cooper hike best of best forums. मतलब
even exist, I have become a reason why some kids log on to Looksmaxx.org and ask the ringleaders how to do their own DIY surgeries. And out of anger for what I've done, these shadow figures like Clavicular don't even care about making the money anymore. They just want to mess up kids' lives. And over the last few days, I've been sent multiple screenshots of him offering 12, 14, 15-year-old kids the guide to bone smashing and the exact incision points for fat removal of the cheek. We need to stop this madness. Huh. Doesn't that profile picture look familiar? Clavicular, the same person that we previously saw on the drug thread, was apparently looking to teach people how to do DIY surgery for free, as well as wanting to teach minors on the website how to bone smash, a practice in which you use a hard object to smash your face bones so that when they heal, it makes your jawline appear sharper. So this leaves me with no option other than to go to the website myself and to see if these claims actually exist and if there is worse on the website. And the first post I see gave me chills. As we can see, Clavicular is still to this day bone smashing in order to improve his facial shape. I don't really understand why someone would advocate for this, because looking at his face from the picture and the red marks, that can't be good. And as I scroll down, I seem to have only found one comment under this post in which a user is questioning why Clavicular is basically hurting himself. But I was still curious to see if he actually told minors to bone smash, so I scrolled on his account until and after looking at the comments, there it is, coming from a minor himself. Looking back at it, it doesn't seem so crazy now what Ace Got You said about Clavicular, but I feel like we're barely scraping the surface, so let's dive deeper. I continued scrolling throughout his account. Most of it is filled with him replying to other posts that people have made here, and you might occasionally find one or two comments from him under some bone smashing posts. This is it. Clavicular's Bone Smashing Guide. In this guide, he talks about how bones reshape themselves after being hit, and in which areas on his face he hits himself, as well as video examples in which we can clearly see that it hurts. Under his video, he also says that his mom found out he was bone smashing and apparently took away his hammer that he was using to bone smash. But underneath that, we can see what seems to be one of Clavicular's friends smashing his bones with an actual hammer. Yeah, it's disturbing. मतलब लोगों के अंदर इस लेवल तक का क्रेजीनेस है कि भाई वो अपनी जॉलाइन वगैरह और मतलब अपने बोन स्ट्रक्चर वगैरह को लेकर इतने ज़्यादा इनसिक्योर है कि वो हथौड़े मार रहे हैं. लिटरली ब्लरिंग में भी पता लग रहा है कि भाई ये हथौड़ा है पूरा, और वो यहाँ ठुड्डी पे मार रहा था. बहन चो. और तुम भी भाई पता नहीं ये क्या चैट टैग की मैंने अभी वीडियो डाल दी होगी अभी तक, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है एडमिट डलने वाली होगी अभी थोड़े दिनों में ही, थोड़े टाइम में. भाई वो भी बोन स्ट्रक्चर की तुम अपना भाई क्या चीज़ों में लगे पड़े हो यार, क्या चीज़ों में लगे पड़े हो बहन चो. अपना जॉ लाइन वगैरह यार, क्या पागल चूतियापंती हरकत में भाई, क्या अपने जीवन बर्बाद कर रहे हो इसके अंदर. इससे बढ़िया मैं तो कहता हूँ भाई कम से कम लौंडियाबाजी ही कर लो, उसमें कम से कम कुछ सीखोगे तो, और आउटकम तो मिलेगा. कम से कम किसी लड़की के साथ जाओगे, अपने क्रश के साथ जाओगे, थोड़ा हाई तो फील करोगे. भाई क्या इसमें तुम्हें अपने हथौड़े मार के यूं करके क्या मिलेगा यार, तुम्हें क्या मिल जाएगा? अपने आप को चोट ही पहुंचाओगे. और भाई पता नहीं है कि ये अगर तुम ये चीज़ करने लगे तो भाई क्या पता भाई जो अभी सर्जरी वगैरह बताई गई है वो भी करने. The fact that these users on this website will go as far as to literally harm themselves just to look better. And no matter how much Clavicular can talk about the positives of this practice, no one will be able to deny that the risks of bone smashing are things like infection,
fractures, soft tissue injuries, scarring, excessive bleeding. Altering the natural structure of the bones can lead to irreversible damage to bones and underlying structures. कितने मतलब इसके तुम्हारे हथौड़े मारने के कितने वो हैं कि तुम अपने जो जिस भी रीजन पे अगर तुम हथौड़ा वगैरह या बोन स्मैशिंग वगैरह या फिर जो भी चीज तुम कर रहे हो भाई, वो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तुम्हें फायदा क्या देगी? बस एक लकीर से खिंच जाएगी, लेकिन उसके साथ ये नुकसान देखो कितने सारे दे रही है। और वो भी लकीर तुम्हारी टेम्पररी है, कोई भी ऐसे परमानेंट नहीं है कि तुम्हारी वो लकीर खिंची गई है, लेकिन ये परमानेंट है। साइड इफेक्ट्स आर परमानेंट। Now that we've seen the evidence of clavicular guiding people on bone smashing and one of his followers being a minor, I thought that this was it. This is how deep the rabbit hole would go. But no, I was wrong. There is literal pornography threads here too. And it's not just one video. There are multiple videos, compilations even, and even some of the videos are extremely NSW and curse. Do not click if you are not able to handle it. This is a what is NSFW? Not safe for work. It is warning label used to indicate that. Create videos of women and asking users what they would do to them. And once again, remember that there are minors on this website who can stumble across these posts super easily, because I did. All I had to do was go to the forums button and just switch the trending tab, and boom, multiple NSFW posts. This whole problem of minors being exposed to pornography isn't just an issue that's ये सारी पोर्नोग्राफी है, टीनेजर्स देख रहे हैं, 13 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे इस वेबसाइट को इतने इजीली सर्व कर पा रहे हैं। और इवन पोर्नोग्राफी भी एक्सट्रीम लेवल की, कि एक होता है ना कि मतलब एक हाई, मतलब कुछ भी पता नहीं क्या फैंटेसी होती है लोगों के अंदर कि भाई अपना लोहे में या फिर ऐसे, पता नहीं कितनी पोर्नोग्राफी में तो ऐसा होता है, एक के मुंह में टट्टी कर देता है, दूसरे के मुंह में बहन की चूत, पता नहीं क्या क्या होता है, वियर्ड काइंड ऑफ, कि भाई एक्सट्रीम बहन जो सोच के और सुन के ही बहन जो ऐसा लगे। तुम्हारी अगर तुम लुक्स मैक्सिंग वगैरह को इतना ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो भाई, ठीक है, अपना ग्रूमिंग वगैरह और फेस वॉश तक ठीक है, इसमें भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला यार। तुम्हें क्या मिलेगा? ये बोन स्मैशिंग, ये बोन स्ट्रक्चर वगैरह भाई तेरा जो है वो है, भगवान ने दिया भाई, भगवान ने कुछ सोच समझ के ही तो बनाया है तेरे को। तू क्यों उसको, और मैं इसको बेटर करूं और मैं उसको बेटर करूं, बेटर करने का नतीजा मैं दिखाता हूं तेरे को। मोनिका, क्या नाम था इसका, मोनिका गैलर, क्या नाम है, कोटनी, ये भाई पहले कितनी सुंदर लगती थी, इसने सर्जरी कराई क्योंकि ये अपनी जो इस सुंदरता को है वो लूज नहीं करना चाहती थी एजिंग के साथ। अब ज्यादा बुरी लग रही है, पहले ज्यादा नेचुरल थी, ये थी, कितनी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। लेकिन अब एक और मैं दिखाता हूं तुम्हें, क्या नाम है उसका, उर्फी जावेद, देखना बहन चो क्या ये, मतलब इस लेवल की मैडनेस चल रही है कि भाई आपको वायरल होना है, चलो ये तो वायरल हो रही है तो ये पैसे वैसे कमा रही है, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है। क्या थोपड़ा बनाया है इसने, देखना यार क्या है ये क्या है, मतलब लोग भाई इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं अपने अपीयरेंस को लेकर। भाई इट इज नॉट योर अपीयरेंस, इट इज ऑलवेज अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर क्वालिटीज, कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज क्या है एज अ मैन। भाई इसने भी अपने एलिवेट करने के लिए, पहले सही लगता था भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूं जैसे तुम हो भाई बहुत सही हो, यू आर फार बेटर देन कि जो अपने इनसिक्योर फील करता है, तुम उससे बहुत ऊपर हो भाई। बस तुम्हें क्या करना है कि भाई तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करना है कि जैसा मैं हूं, भगवान ने बनाया यार, कोई गलती थोड़ी ना करी है। सो डू नॉट प्रैक्टिस दीज सच काइंड ऑफ कि तुम बोन स्मैशिंग, बोन स्ट्रक्चर, अपनी जॉ लाइन वगैरह, भाई फैट लॉस वगैरह, फैट वगैरह कम हो जाए, तुम्हारी जॉ लाइन वगैरह सब निकल जाएगी यार। जैसे एक पर्सन के अंदर मसल होता है ना, सबके अंदर मसल होता है, वैसे भाई सबके अंदर
जॉ लाइन होती है। ऐसे नहीं रिसाइडिंग ये वो, भाई इतने डिटेल में मत जाओ, तुम्हें मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं करनी भाई। और अच्छा तुम्हें दिखना है, अच्छा वो है भाई, ये तुम्हारे करेक्टरिस्टिक को नहीं डिफाइन करती। अपीयरेंस कहीं काम नहीं आएगा भाई। अपीयरेंस इज जस्ट लाइक कि मेरे को एक एप्लीकेशन है, मेरे को जॉब चाहिए भाई, एप्लीकेशन ये कितना सुंदर मैंने अच्छे से लिखा है, दिस इज योर अपीयरेंस। तुम अप्लाई करोगे, उसको लगेगा कैसा और इसके अंदर लिखा क्या है, दैट डिफाइंस यू। इट इज नॉट कि तुम्हारी राइटिंग कितनी सुंदर है, इट इज नेवर अबाउट दिस, इट इज ऑल अबाउट कि इसके अंदर मटेरियल तुमने लिखा क्या है, स्किल्स क्या लिखी है, दैट मैटर्स ओनली। दैट्स वाई यू नीड अ ब्लैक पिल, अ रेड पिल, की जो तुम्हें बताए कि भाई दीज आर द थिंग्स, इफ यू वर्क ऑन दीज यू आर फार अहेड ऑफ। ये लगाओ कि अपने स्कूल के अंदर तुम जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, यार हैं, आगे हैं, पीछे हैं, भाई तुम अपने स्कूल में टॉप पे हो। कितने बंदे, 1000 बंदे, 1000 बच्चे पढ़ते ना, 1000 बच्चों में तुम 1 पे हो, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है। सोचो तुमने इन पे मेहनत कर ली, तुम ये क्या ये डिबे बहन जो। तभी मैं बोलता हूँ भाई ये चैट टैग है, ये है भाई, ये खुद बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कुछ भी ये क्या कर रहे हैं। ये तो बस अपना चैनल बन गया है, व्यूज आ रहे हैं तो बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लोगों को वो सर्व किए जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो मजे लिया जा रहा है, उसे खुद नहीं पता वो क्या बना रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जितनी ई बुक वगैरह उसने बनाई है भाई, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता उसकी ई बुक भी बिक रही है, बहन की चूत देखें जरा। चैट टैग ई बुक, रीमॉडलिंग योर फेस, 1000 रुपए की ई बुक, बहन की चूत भाई, क्या बकचोदी है, क्या कर रहे हो यार, 1000 रुपए तुम इसमें खर्च कर रहे हो क्या?